Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and fine. So this is Sonali here and I'm gonna film this vlog about a beautiful nature camp which is situated in Lepigoda block of Sundargarh district, which is 42 km far from Sundargarh bus stand, and the nearest railway station is Jharsuguda railway station, which is 36 km from Sundargarh and 65 km from that nature campsite, and the nearest airport is V. Surendra Sai Airport, which is known as Jharsuguda Airport also. So this information is for those who are out of Sundargarh or out of Odisha. So as you can see, I am in front of Government College Sundargarh. This is and this is the way where we supposed to go. So without having late, let's start our journey. We reached. So this is the two-way road as you can see, and both the roads are goes to that place. So now I'm heading out to this lower side. I'm in this lower way and I'll show you the view from that side, and then I'll come back to that point and start my journey towards the upper side, and I'll show you the view from that side as well, where there is a nature camp and park also. So let's go with me. Finally we reached. So this is the place guys, and yeah, one thing I forgot to tell you that this is popularly known as the Sarafgarh Dam, and which is surrounded by nature and spreads over 7 acres, and this is very famous for having tranquil environment, scenic beauty. You can come here with your family, friends, with your loved ones to enjoy this beautiful place. You can see that there are lots of vehicles are parking over there because this is a new weekend, so lots of people are come up here to enjoy their new year. Alright, and yeah, this is a temple. This is the Hanuman temple, and it's situated beside the dam. So मैं अभी नीचे जाके आपको दिखाने वाली हूँ. ये है वो व्यू. अभी हम डैम के ऊपर चल रहे हैं. There are lots of people guys. Everyone is enjoying, taking selfies, photographs. And yeah, some are taking bath and enjoying the cold water. So basically ये डैम है, and
ये न्यू ईयर था तो थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरा खाली रहता है. आई मीन दिस इज़ अ पीसफुल प्लेस, बट इट्स क्वाइट ओके. एंड या बेस्ट टाइम अगर आप देखें तो सितंबर से अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस प्लेस, बिकॉज एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, वेदर सही रहता है, तो इस टाइम आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो इस प्लेस को. और गर्मी के टाइम वैसे भी हॉट रहता है वेदर, सो यू कांट रियली इंजॉय, राइट. So now let's go to the upper side. See the view guys, I mean it's so beautiful. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने में. चारों तरफ बस ग्रीन ग्रीन ग्रीन. रोड भी काफ़ी अच्छा है. वैसे गाइस एक रोड थोड़ा नैरो है, आगे जाके एक नैरो मतलब रोड आने वाला है. लाइक थोड़ा आपको केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा अगर आप बाइक में या स्कूटी में आ रहे हो तो. ये तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द हॉर्न, राइट. लोग यहाँ पे भी कर ले रहे हैं. एक्चुअली न्यू ईयर था तो इतना मतलब रश था कि प्लेस ही नहीं बचा था पिकनिक के लिए, तो लोगों को जहाँ मिल रहा था वो वहीं पे ही कर ले रहे थे. सो अभी हम जो अपर साइड है, आई मीन जो डैम का जो अपर साइड है वहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाने वाली हूँ. सीधा पार्किंग. ये तो अभी शुरुआत है, आगे और भी लंबी लाइन लगी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको. ये स्टार्ट हुआ यहाँ से और ये रहा उसका एंट्री गेट. यहाँ पे भी देखिए कितनी लंबी, और ये उसका डैम का नीचे का व्यू है. सो मैं अभी आपको पार्क का व्यू दिखाने वाली हूँ. अभी मैं पार्क की तरफ जा रही हूँ. एंड सॉरी फॉर सेकिंग गाइस, एक्चुअली वॉकिंग कर रही तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही सेक हो रहा है.
this is the end of this vlog, guys. If you like the video, then give a big thumbs up, and if you first time visit my channel, then do subscribe it and press that bell icon beside the subscribe button so that you can notified when I uploaded a new video. And please do share this channel with your family, with your friends, and keep support. So soon we meet in our next vlog. Till then, take care. Bye bye. See you. And thanks for watching. Bye bye.